Hello student, welcome to today's science class. In last video, we learned about the kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi. In this video, we learn about classification of microbes or classification of microorganism. So, what are the microorganism? The micro means small, so it is very small, which is not easily see with our naked eyes. We use the microscope, that is called the microorganism. So among the living organism, microorganism are largest in number and hence they are classified as follow. So how they can classified here? Microorganisms are classified in two groups, prokaryotes and eukaryotes. In prokaryotes, bacteria is there, and in eukaryote, protista, fungi and algae is there. Here the size also given that it is very small, and which unit we are using for the microorganism? It's a micrometer or a nanometer. It is used for the to measure the microorganism. Okay, so our next is the bacteria. So here first of all, size of the bacteria is given 1 micrometer to 10 micrometer. The bacteria is unicellular, independent. It means it's a free living, parasitic. It means that it depends on the other. वो दूसरों पे भी डिपेंड रहता है और खुद से भी अपना फूड बनाता है. इसके लिए उनको इंडिपेंडेंट और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म द कॉलोनी. अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया मिला के अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं. बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद द cell wall, but the distinct nucleus or cell organelles are absent. So bacteria is a prokaryotic cell. Third one, they reproduce by a simple binary fission. वो अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो वो यूज करते हैं बाइनरी फिजन. इट मीन्स व्हाट? ये ऐसे एक बैक्टीरिया होता है, बाइनरी फिजन में वो अपने आप को 2 सेल में डिवाइड कर लेता है. तो दोनों सेल अलग होके वापस वो एक खुद अलग अपना पेरेंट्स बैक्टीरिया बनते हैं. फिर वापस ये सेल जो होती है अगेन 2 सेल में डिवाइड हो जाती है. तो एक बैक्टीरिया का बन गया 2 और दोनों के बन गए 4. इस तरह से वो अपने को डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. In favorable conditions, bacteria grow vigorously. It means that very forcefully or very energetic and can double their number in 20 minutes. जैसे मैंने आपको बताया binary fission. They use the binary fission and they develop and make their number double in 20 minutes. So here's some example of bacteria. Coccus is there. Then Coccobacillus is there. Bacillus, that is rod shaped bacteria. And Spirillum is there, that is spring like bacteria होते हैं. तो शेप की वजह से भी उनको क्लासीफाई किया जाता है. सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड ऐसे नहीं होता है कि सब बैक्टीरिया होते वो हार्मफुल होते या हार्मफुल होते. तो ऐसी बात है कि कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं. सो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स रहते हैं, इनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहता है विच हैज़ नाइदर अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विथ अ मेम्ब्रेन. इंडिपेंडेंट रहते हैं, बाइनरी फिजन होता है उनमें. Not all bacteria are harmful to humans. There are some bacteria which are beneficial in the different ways. So which is the beneficial bacteria? First we take the example, convert milk into curd. तो उसमें लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज करते हैं जो मिल्क को दही में कन्वर्ट करते हैं. फर्मेंट फूड प्रोडक्ट्स,
उसमें भी बैक्टीरिया रहते हैं जो हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं. हार्मफुल बैक्टीरिया are the bacteria that can causes the illness, or they are responsible for many of the infectious disease like pneumonia, tuberculosis, tooth decay. That is harmful bacteria. Okay, so next is protozoa. So here the structure of protozoa. The size of protozoa is approximately 200 micrometer. Protozoans are found in a soil, fresh water and sea water. Some are found in the body of other organism and are pathogenic. Pathogenic means what? They are capable of producing the disease, that is the pathogenic. These are unicellular microorganism with eukaryotic cell. Third number, there is a great variation in the cell structure, organs of the locomotion and modes of nutrition among the protozoa. So there are lots of variation among there. So they are using the cilia. Cilia are the short hair-like structure present over the surface of the body, and cilia help in the locomotion as well as for the food collection. It is used in the protozoa. In I think in the kingdom Protista we study all this cilia and that pseudopodia, that is hair-like structure. Okay, so next these organisms reproduce by simple cell division. They reproduce themselves by a simple cell division. उनमें जो cell division होता है वो simple तरीके से होता है. Example, amoeba, paramecium, that is the free living in dirty water. Entamoeba histolica, that is causes amoebolysis, and the Plasmodium vivax causes malaria, and Euglena, that is autotrophic. It means that they develop their own food. So here structure of protozoa, Euglena, that is the example, and Plasmodium. Next, fungi. The size of fungi is approximately 10 micrometer to 100 micrometer. These are found on the decaying organic matter or the dead bodies of the plant and animals. These are eukaryotic organisms. Some are unicellular and other are visible with naked eyes. All the fungus are not we can see under the microscope. Some are visible with our naked eyes. हम आंखों से भी देख सकते हैं. It's a saprotrophic, absorb their food from the decaying organic matter. They reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. And the example is baker's yeast, mushroom and candida, that is the example of fungus. तो ये जो फंगस है तो ये अपना फूड जो सड़े हुए पत्ते रहते हैं और कुछ डिकेइंग मैटर रहते हैं तो उनसे अपना ये फूड लेते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं. तो इसमें क्लोरोफाइल नहीं होता. सो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो स्पोर द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है. Here what are the example of fungi? Mushroom, and all the figures are here, yeast, molds, like this. Next, algae. The size of algae is approximately 10 micrometer to 100 micrometer. They are aquatic, means living in the water. Eukaryotic, unicellular, autotrophic organism. It means that they make their own food. Photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the cell wall. उनके सेल में ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, उसकी हेल्प से वो अपना खुद का फूड बनाते हैं. एग्जाम्पल इज क्लोरेरिया एंड क्लाइमोडोमोनस.
Very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible with the naked eyes. Naked eyes. Here the example of algae. Next, viruses. The size of viruses is approximately 10 nanometer to 100 nanometer. Generally, viruses are not considered as living organism, or they are said to be the organism at the age of living and non-living. Why they are said like that? तो उनको ऐसे क्यों कहते हैं कि वो जो है वो बाउंड्री रहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की. सो व्हेन दे आर एंटर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे बिकम एक्टिव and they start to reproduction, but when they are outside of the body they cannot reproduce themselves. Viruses are extremely minute, that means they are 10 to 100 times smaller than the bacteria, can be seen only with the electron microscope. वायरसेस के लिए हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं. They are found in the form of independent particles. Free living particles है वो. Viruses is a long molecule of DNA and RNA covered by a protein coat. उनके ऊपर एक प्रोटीन का कोट रहता है. जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं तो with the help of that protein coat they can multiple their size or they can grow. Viruses survive only in the living plant or animal cell and produce their own proteins with the help of host cell and create their numerous replica. Then they destroy the host cell and become free. These free viruses again infect new cell. जब ये किसी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ के जो होस्ट सेल रहते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं. तो और अटैक करने के बाद विद द हेल्प ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स वो क्या करते हैं, जो होस्ट सेल रहते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करके खुद की जगह बना लेते हैं, फिर वापस वो न्यू सेल के ऊपर अटैक करते हैं. वायरसेस कॉजेस मेनी डिसीज टू प्लांट एंड एनिमल्स. वायरसेस की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे डिसीजेस है जो वायरस की वजह से ही होते हैं. So these are the classification of microbes, and here our first lesson is complete, the living world and the classification of microbes. Thank you, student.